are getting some more information, and let me tell you that this is all source based at the moment. The sources are also telling us that the Indian Air Force has destroyed Alpha 3 control rooms and launch pads of Jaish-e-Mohammed in not just Balakot, that Pakistan was claiming that there was some sort of an activity, but we also given to understand that the launch pads were in fact destroyed in Muzaffarabad and Chakoti as well, Maruf. Yeah, we've had repeatedly claims made by senior military commanders who have been, I would quote the name of General Jaswal as one, former Northern Army commander. And having been Northern Army commander, he would have been very, very familiar with the territory across the LAC because that's all his remit. And he has said very clearly on more occasions than one in this panel that there are at least 42 terror camps that we are familiar with. We know their coordinates, we know their details. But I think we are not going to hit all 42 because reports are that Pakistan has killed many of them and push those terrorists to mingle with the civilian population. Okay, Maruf, I'm interrupting you there. Let me take a very quick reaction from defense expert Arasin Singh also joining us on the broadcast. Arasin Singh, there has been a massive development. We given to understand that our Indian Air Force has destroyed Jaish-e-Mohammed terror camps. Launch pads of the JM have been destroyed not just in Balakot, but now information coming in, source-based information of course, that these launch pads were also destroyed in Muzaffarabad and Chakoti as well. It's a massive development post Pulwama, sir. Yes, it is a massive development indeed from the point of view that it's a new inflection point as far it's a new inflection point as far as proxy war is concerned. Hello? Go on, sir, I can hear you. I said it's a new inflection point as far as proxy war is concerned, and yesterday I knew that something was going to happen because and even Pakistan was expecting something of some retaliation from India because yesterday the army chief had gone and called on the air chief, and a lot of statements were issued, belligerent statements from Pakistan. But it is a red letter day. It is an inflection point. But remember one thing, I mean, the Americans dropped the mother of all bombs, in Afghanistan. And I don't know how much of TNT they have pounded over Afghanistan, but, jihadism refuses to fade away. But if India and America, mind you, is an extra regional power, but if we were to salvage ourselves from this jihadism, along with this strike that has been carried out, I expect the judiciary to scrap Article 35. Well, sir. Yes. Arasin Singh, sir, please stay with us. Let me also go across to my colleague Padmaja, who's now joining us live from Srinagar. Padmaja, the Indian Air Force strikes on terror camps of the Jaish-e-Mohammed. Massive development. 1,000 kg bombs were dropped, is what we're given to understand. And these camps were targeted in Muzaffarabad, in Chakoti, as well as Balakot. Massive development there post the Pulwama attacks, Padmaja. Absolutely, and it is quite predictable that Pakistan is even now reacting with a denial. They have, of course, had to accept that Indian aircraft crossed over, but here is what the Pakistani information agency is saying, and they're saying that Indian aircraft intruded from the Muzaffarabad sector, but they faced a timely and effective response from the Pakistan Air Force, which is why they had to release a payload in haste while escaping, which fell near Balakot. Also at pains to say that there was no damage. In fact, that is what is being said by Pakistan right now. But let me quickly add, Swati, the important details that we are getting right now. According to sources, we are told that the Indian Air Force has destroyed Alpha 3 control rooms and launch pads of the Jaish-e-Mohammed, and this has happened in Balakot, Muzaffarabad and Chakoti, and there were several bombs which were dropped. Several of them hit the target and extensive damage has been done. However, we are expecting a formal response from the MOD, a formal response from the army in just a while from now, and it's going to happen sooner rather than later. What is very, very interesting, and our viewers will appreciate this, Swati, that the Prime Minister, even as we speak, is set to leave for the Gandhi Peace
Peace Prize function, and soon after that he has a rally to address in Rajasthan. So, just a few hours ago we have this strike on Pakistan, and now the Prime Minister in a while is going to be on his way to receive for the Gandhi Peace Prize function. Absolutely, Padmaja. In fact, we have some more information coming in which clearly indicates that this was a big operation carried out on a large scale. 12 jets participated in the operation. Several bombs were dropped at multiple locations, not just one bomb, but several. And in fact, a big payload was dropped. That's what we're given to understand through our sources now, which indicates that, of course, the planning was being carried out for a long time. A free hand was given to our forces to avenge the martyrdom, the death of the CRPF जवान। बड़ी बात यहां पर यह कि मुजफ्फराबाद में भारतीय लड़ाकू विमान आए, ये दावा पाकिस्तान कर रहा है। ट्वीट किया है पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने, और वो ये कह रहे हैं कि पीओके में घुसकर भारतीय सेना ने कार्रवाई की और उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना ने एक्शन लिया तो वापस लौट गए। इस तरह का ट्वीट इसलिए और अहम, या ये समझिए कि जब पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई थी उरी हमले के बाद, तो उस दौरान भारत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। भारतीय सेना ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि कैसे कार्रवाई हुई थी। लेकिन यहां पर अहम यह है कि पाकिस्तान ने कभी उस बात को नहीं माना, और अब ये देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो ट्वीट आया है, सोर्सेस से भी ये जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल इस पर कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एलओसी पर जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये अभी हमें जानकारी मिल रही है। सुबह 3:30 बजे ये कार्रवाई हुई है, ये अभी सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सोर्सेज से ये अहम खबर इस वक्त मिल रही है, जिसमें जैश के ठिकानों पर हमला किया गया है, जैश के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उस दौरान भी आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया था, और भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी थी। पुलवामा में आतंकी हमला जब सीआरपीएफ के जवानों पर हुआ, 40 जवान उसमें शहीद हुए थे, और उसके बाद से लगातार ये देश में भी जनता की तरफ से मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन सेना ने अपने विवेक अनुसार, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये कदम उठाया है, और सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है आतंकी ठिकानों पर 1000 किलोग्राम के बम गिराए गए हैं, और ये स्ट्राइक किया गया है जैश के ठिकानों पर। सुबह 3:30 बजे सेना की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इस बात की जानकारी अभी सोर्सेस से मिल रही है, हालांकि अभी इस पर इंतजार करना होगा किसी भी तरह के कोई कंफर्मेशन का। लेकिन जो ट्वीट हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि पीओके में भारतीय वायुसेना की तरफ से कार्रवाई हुई है, एलओसी का उल्लंघन किया है, इस बात का आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया। लेकिन अब सूत्रों से भी यह खबर मिल रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय सरजमी पर, पुलवामा पर सीधे सेना को निशाना बनाया जाना, सीआरपीएफ पर हमला करना, जिसमें 40 जवानों ने शहादत दी, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग हो रही थी। और खुद सेना ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो यह कहा था कि अपने तय समय अनुसार, अपने तरीके से आतंकी कैंपों को, आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जाएगा। लेकिन आतंकी ठिकानों पर 1000 किलोग्राम के बम गिराए गए हैं। सूत्रों से यह खबर सामने आ रही है, और जैश के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। ऐसे जगहों को पहले स्पॉट किया गया और एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इसे अंजाम दिया गया है।